हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स के फार्मूले लिखे थे और कुछ टेक्निक्स लिखी थी कैसे हमें डेरिवेटिव्स को निकालना होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे दैट आर ऑन ऑन कॉन्टिन्यूटी। जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी स्टडी करेंगे, है ना। और दे आर द फोर थ्योरम्स, आई थिंक फोर, वन टू थ्री एंड फोर, फोर थ्योरम्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना। तो लेट अस सी कि फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है। फर्स्ट थ्योरम इज बोरेल्स थ्योरम, दिस इज नेम्ड बाय बोरेल्स थ्योरम। और here we are taking this fx function which is defined on a closed interval a comma b, है ना। a comma b में हमने closed interval a comma b में फंक्शन fx डिफाइंड है, उसको हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। और if it is continuous in the closed interval, then what are the such conditions we have, such results we have, such properties we have. So here uh, this one, theorem one, this is Borel's theorem. If fx is continuous in the closed interval a comma b, then given a positive number of xylem. For a given positive number of xylem, the interval can be always be divided up into a finite number of subintervals such that mod of fx dash minus fx double dash is less than epsilon, where this x dash and x double dash are any 2 points in the same interval. Okay, so इनका कहना यह है कि हम कोई भी नंबर क्यों ना ले लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर क्यों ना ले लें, सो हम जो हमारे पास ए बी इंटरवल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको पार्टीशन कर सकते हैं सब इंटरवल्स में। एंड दस एंड सब इंटरवल का पार्टीशन करते करते एक स्टेज हमारी ऐसी जरूर आएगी कि इफ वी जस्ट टेकन एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश फ्रॉम एनी इंटरवल, आई एम जस्ट टेकिंग मेंशनिंग द इंटरवल एक्स आई माइनस वन and xi, this is sub interval, है ना। I you can just say this is I from 0 1, no, it is from 1 to n, you can just take it, this is from 1 to, you can just I equals to 1 to n, 1 to up to n, okay, मतलब ये हमारे पास है। तो this I will be finite, I will be finite in the sense कि we have finite subdivision, and finite subdivision में ही हमको ये कंडीशन मिल जाएगी, इस कंडीशन होल्ड हो जाएगी, है ना। और अगर मान लो हमने पार्टीशन कर रहे हैं तो हमने कुछ बड़े इंटरवल्स लिए, फिर और उनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करें और डिवाइड करें, बट कहीं ना कहीं फाइनाइटली जाके सब डिवीजन में हमको ये पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि मॉड ऑफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी। तो इनका कहने का मतलब है अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दैट क्लोज इंटरवल, देन दिस कंडीशन वी हैव। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारे पास वट एवर वी चूज अ नंबर, है ना, we can able to divide it finitely subdivision such that the difference between the 2 points of the same interval, if I'm just taking this x dash and x double dash taking from the one sub interval, कोई भी एक सब इंटरवल के लिए, ऐसा नहीं कि x dash किसी दूसरे सब इंटरवल का पॉइंट है, x डबल डैश किसी दूसरे सब इंटरवल का पॉइंट है, ऐसा नहीं है। दिस आर टेकन फ्रॉम वन सब इंटरवल, किसी एक सब इंटरवल के ही हमने दो पॉइंट्स लिए और वो उनके बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। एक स्टेज जरूर आएगी और वो स्टेज फाइनाइट पे ही होगी। ये इस चीज का कहना है, इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का कहने का मतलब ये है। तो लेट अस राइट द प्रूफ, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू राइट दिस प्रूफ in the some language, some definition of continuity we will use, and let us see कि how we will can see it clearly कि ऐसा possible होता है finitely. Okay, so let's write the proof of it. So once we again read it, if fx is a continuous in the closed interval a comma b, then the given a positive number of epsilon, the interval can always be divided up into a finite number of subintervals such that mod of x dash minus mod of x double dash is less than epsilon, where x dash and x double dash are any 2 points in the same interval. We are taking these 2 points from the same interval, and difference between them is less than epsilon. Okay, so let us prove it, this theorem. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास।
फिर हम कंट्राडिक्ट करेंगे तो प्रूफ लिखते हैं। लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो सपोज द थ्योरम डज नॉट होल्ड। ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि फाइनाइट सब डिवीजन में हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है। तो सपोज दैट, लेट अस सपोज राइट हियर, सपोज द थ्योरम डज नॉट होल्ड, does not hold. It means that, what meaning of this? It is impossible. It is impossible to divide the interval with a comma b, close interval a comma open interval a comma b into a finite number of subinterval which satisfy the condition, which satisfy the condition given in the theorem. ऐसा पॉसिबल ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, फिर हम इसको कंट्राडिक्ट कर देंगे। ओके, सो लेट अस डिवाइड दिस इंटरवल इन दिस टू पार्ट्स, है ना। हमारे पास अगर मान लो हमने एक इंटरवल लिया, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग इंटरवल ए टू बी, है ना, और इसको इसका मिड पॉइंट ले लिया सी। दिस इज योर ए प्लस बी बाई टू, है ना, दिस विल बी मिड पॉइंट। तो अब ये इंटरवल हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ये इंटरवल हो गया और एक इंटरवल ये हो गया, है ना। इस तरीके से हम फाइनाइटली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ लेट्स डिवाइड एंड स्टार्ट डिवाइडिंग द थिंग। अब हमें प्रूव करना है जो हमने बात ली है कि दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट दिस कंडीशन। अगर हम फाइनाइटली डिवाइड करते हैं तो कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं करती, बट हम होल्ड करा के दिखा देंगे, है ना। दैट इज आवर टास्क, है ना। अगर हम ये दिखा के तो हमारी बात कंट्राडिक्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है दिस कंडीशन। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग हियर, इसको इसको रखो। सो नाउ नाउ divide the interval a comma b to equal parts into two equal parts। हमने अपने इंटरवल को डिवाइड करना शुरू कर दिया टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल इंटरवल्स, दैट इज योर a comma c एंड दिस इज योर c comma, जहां पर c क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, where I'm just taking this is c is just equal to a plus b by 2। Okay, then in at least one of these interval the theorem must be false, must be false। भाई क्योंकि हमारे पास हम फाइनाइट, जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो थ्योरम होल्ड नहीं कर रही, है ना। तो इन दो इंटरवल में से एक इंटरवल ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो सब डिवीजन करा तो सभी में से हर एक इंटरवल के अंदर ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि फाइनाइटली हम उसको रिड्यूस ही नहीं कर रहे, उसको हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही। इसका मतलब है कि इनमें से एक इंटरवल ऐसा जरूर होगा जिसमें ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही, या कह सकते हो थ्योरम फॉल्स है ना। और थ्योरम अगर फॉल्स है तो उसी इंटरवल को ले लेते हैं, फिर उसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना। जिस इंटरवल के अंदर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, हमने सपोज कर लिया कि एक वन ऑफ देम इज नॉट होल्डिंग, तो हमने वो कोई भी हम इंटरवल ले सकते हैं, उसको हम नाम दे देंगे और फिर उसको उसको लेकर फर्दर उसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। फिर इसी तरीके से हम उसको ब्रेक करते जा रहे हैं। तो हम जस्ट टेकिंग कॉल दिस इंटरवल, जो हमारे पास जिस इंटरवल में ये होल्ड नहीं कर रही, दोनों में नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग एनी वन ऑफ देम।
एंड उसको हमने ए A1 कामा B1 मान लिया। तो कॉल दिस इंटरवल दैट इज इक्वल टू A1 कामा, ओके, तो दिस इज योर A1 कामा B1 जिस इंटरवल में नहीं होगी। Okay, so further divide this interval in two parts. So now again, hmm, okay. So this is your call this interval is A1 B1 and again divide this interval into two interval that equal interval। जैसे कि हमने AB को डिवाइड करना है उसी तरीके से A1 B1 का मिड पॉइंट मान के हम इस A1 ये जो इंटरवल आया इन्हीं में से कोई होगा, वो चाहे या तो वो इक्वल टू होगा A कामा C और C कामा B, इनमें से कोई भी इंटरवल हम ले सकते हैं। ठीक, उसको हमने A1 B1 मान लिया और उसको फिर से हमने पार्टीशन करा। तो डिवाइड अगेन this the interval divide this interval A1 B1 into two equal parts, into two equal parts, intervals again, then at least one of them is not satisfying the theorem, है ना, at least one of them is intervals the theorem must be false, है ना। उसका नाम हमने फिर से A2 B2 रख दिया, कॉल दिस इंटरवल A2 B2, है ना। ये सारे वो हम इंटरवल्स निकालते जा रहे हैं जिसमें हमारे पास थ्योरम जो है फॉल्स है ना। तो सिमिलरली इफ वी जस्ट A2 B2 पे लिया, उसका मिडिल पॉइंट लिया, फिर हमारे पास दो इंटरवल्स मिले, उनमें से हमारे पास एक इंटरवल में कम से कम एक इंटरवल में तो हमारे पास थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना। तो उस इंटरवल को फिर से पिकअप कर लिया, उसको A3 B3 नाम दे देंगे। एंड इन द सिमिलर वे if we do we get some points A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये हमारे पास इंटरवल्स मिल जाएंगे। एंड इन इंटरवल्स के अंदर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेटिस्फाई करे, है ना, थ्योरम को। तो प्रोसीडिंग in this way, proceeding in this process of bisection, we thus obtain an infinite set of intervals, है ना। ऐसे करते जाएंगे तो we will get some infinite set of intervals that is your A comma B, है ना, A1 B1 A2 B2 and so on up to this is your A and B1, in each of which the theorem is false। ओके, तो ये हमारे पास मिल गया। ठीक, सो लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी B माइनस ए, इसकी B1 माइनस A1, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी B2 माइनस A2 एंड सच दैट दिस BN माइनस AN similarly we will get। So you can just say the sequence of length, the sequence of the length of this interval, because जैसे जैसे हम ब्रेक करते जा रहे हैं इंटरवल को, हमारे पास लेंथ रिड्यूस होती जा रही है एंड दैट लेंथ विल बी टेंडिंग टू जीरो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। वो जैसे जैसे हमारे पास
हर एक इंटरवल को हम पार्टीशन करते जा रहे हैं ना, ब्रेक करते जा रहे हैं, छोटा छोटा करते जा रहे हैं, एंड दिस लेंथ विल बी टेंडिंग टू जीरो एज n टेंडिंग टू infinity. So you can just see the sequence of the length of these intervals. These are b minus a, b1 minus a1, and this is b2 minus a2, and so on and so on. These are its lengths converges to zero. समझ पा रहे हैं कि जीरो हमारे पास क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी डिक्रीज करती चली जाएगी. एंड द sequence of the end point of these intervals in this end points sequence means a हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, and this is, and similarly this is b, b1, b2, and so on, converges to same limit. Same limit alpha, and same this is alpha. ओके. इट मीन्स इसकी ये भी हमारे पास अल्फा पे कन्वर्ज करेगी, और ये भी हमारे पास सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि देखो कि लेंथ a1 और b1 के बीच की जो लेंथ है, an और bn के बीच की जो लेंथ है, वो बिल्कुल जीरो हुई जा रही है. इसका मतलब दे इफ वी n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस द a एंड पॉइंट, जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, दैट विल कन्वर्जेस टू अ लिमिट l या अल्फा, एंड दिस b1 आल्सो इज कन्वर्जेस टू अ फिक्स लिमिट अल्फा. ओके. So we can just see this alpha will be belong to the closed interval a comma b, because उसी के अंदर ही हैं सारे पॉइंट्स, है ना. So that will be converging to that limit, this point. So I'm just taking this alpha. Let this alpha is different from, let alpha be different from a and b. हम इन जो a और b है उनको हमने नहीं, के अलावा हमारे पास कोई अल्फा है, then then since the function fx is continuous, क्योंकि x अल्फा उसी इंटरवल से होगा, तो इसका और फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है उस क्लोज इंटरवल a कमा b में. इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है. इट मींस दैट दिस fx इज कॉन्टिन्यूअस. सिंस fx इज continuous at x is equals to alpha. So अगर continuous है, then there exists delta such that you can just say, so there exists a positive number delta such that this mod of fx minus का f alpha, ये तो continuity की definition होगी, less than epsilon when this is mod of x minus alpha is less than delta, है ना. मतलब हमारे पास epsilon तो पहले से था ही, तो उस epsilon के लिए हमको कोई ना कोई डेल्टा जरूर मिल जाएगा at for this point, such that fx minus f alpha is less than epsilon when this mod of x minus alpha is less than delta. So if I'm taking any so large, if I'm taking, let this n be so low that जो हमारे पास लेंथ है bn माइनस an इज लेस देन डेल्टा, है ना. मतलब इतना हम n को बढ़ाते बढ़ाते जाएं ताकि डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा हो जाए. ठीक है. देन यू कैन से, अगर इसकी लेंथ इज लेस देन डेल्टा, then definitely this will be contained in this interval, this an minus delta and an plus delta, उसके अंदर वो belong करेगा. then you can say अगर इस इंटरवल की लेंथ ही हमारा डेल्टा है, तो इट मींस दैट इट विल बी बिलोंग टू, देन द होल इंटरवल दिस an comma bn is contained entirely. This is your an minus delta and an plus delta. Okay, so
क्योंकि अगर इनका हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो इट विल बी टू डेल्टा, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यू कैन जस्ट से दिस इज an प्लस डेल्टा माइनस का दिस इज an प्लस का डेल्टा, दिस इज कैंसिल एंड इट इज टू डेल्टा। तो अगर हमारे पास कोई ये है, हमारे पास इसका लेंथ डेल्टा है, तो ये जो इंटरवल बनेगा इंटायरली विल बी कंटेनिंग दिस पॉइंट। ओके, an से ही तो हमें आगे बढ़ना, contain this interval. Okay, so for we know that this alpha is lies between this. So for we know that this is alpha is less or equal to bn and greater equal to an. It means that so therefore, if I'm just taking these points, if I'm just taking this is x dash, x double dash, 2 points, be any 2 points, be any 2 points in the interval. In the interval, this is an comma bn, b है। इफ आई एम जस्ट टेकिंग एनी टू इंटरवल, तो अगर ये हमारे पास है और ये इसके अंदर इंटायरली कंटेन्ड है, अगर इसके अंदर टोटली कंटेन्ड है, इसका मतलब है, और ये हमारे पास यहाँ से आया कि जो एक्स है दिस इज और वी कैन जस्ट से कि अल्फा प्लस यहाँ से इंटरवल हमारे पास बन गया। तो अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये कंडीशन को होल्ड करेगा, तो यू कैन जस्ट से लाइक दिस एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एल्फा अल्फा, और इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन बाई टू ले लिया ताकि हमें हम प्रूव करने में आसानी, जैसे कोई भी हमने एप्सिलॉन बाई टू लिया तो उसके लिए भी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। कोई भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इट विल बी होल्ड फॉर ईच एंड एवरी एप्सिलॉन, तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर एप्सिलॉन बाई टू एफ एक्स डबल डैश माइनस ऑफ एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अब ये हमारे पास कंडीशन मिल गई बाय द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द थ्योरम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो main है that is your, so that we can say, so that this is अगर हमें एफ एक्स डैश माइनस ऑफ एफ एक्स डबल डैश कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी लेस और इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं चीजों को, तो इसको आप ऐसे लिख लो, दिस इज एफ एक्स डैश माइनस का एफ अल्फा एंड प्लस का एफ अल्फा, हमने ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, और माइनस का एफ डबल डैश, सॉरी एफ एक्स एक्स डबल डैश, ये तो पहले से मौजूद ही है। सो वी कैन लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स डैश मॉड ऑफ एफ अल्फा माइनस एफ एक्स डबल डैश। ओके, यू कैन write like this, so you can just say this is your एफ एक्स डैश सकते एफ एक्स डबल डैश माइनस का एफ अल्फा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है देयर इज नो चेंज, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन लिख के। ओके, सो लेकिन ऐसा ऐसा हमने क्या था, जो हमने ए एन बी एन इंटरवल्स लिए थे उस इंटरवल में वो कंडीशन होल्ड नहीं कर रही थी, बट यहाँ पर निकल के आ गई एफ एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, यहीं से यही चीज तो मिल के आई, दिस इज एफ एक्स डैश एफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस दैट कि हमारा जो रिजल्ट जो हमने लिया था वो हमारे पास कंट्राडिक्शन को करता है, कंट्राडिक्शन, इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही नहीं, ठीक है। वी कैन एबल टू फाइंड फाइनाइट, ठीक है। तो विच लीड्स टू कंट्राडिक्शन। ओके, तो हेंस आवर अजम्पशन दैट थ्योरम इज फॉल्स इज इनकरेक्ट, है ना। तो हेंस आवर अजम्पशन that theorem is false the theorem is true। Thus theorem is true। इट मीन्स हमको फाइनाइट स्टेज पे ही हमको मिल जाएगा सब इंटरवल जिससे हम अपनी कंडीशन मॉड ऑफ एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट विल बी पॉसिबल फॉर एनी पॉजिटिव नंबर। So when alpha coincides with A and B, the theorem can be proved in the same way, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फा ए हो गया या फिर बी हो गया,
then you can also say like this. So this is also true when alpha coincide with A and B. With A and A or the theorem can be proved in the same manner. Okay. ये तो हमने प्रूव करा कि if फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू. बट अगर हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड नहीं है देन इट विल बी नॉट ट्रू. ये जरूरी नहीं कि ये चीज हमारे पास ट्रू हो. तो अगर हम इसको एज अ रिमार्क देखना चाहें कि हमारे पास अगर क्लोज इंटरवल नहीं है तो ये थ्योरम जरूरी नहीं है. ऐसा प्रूफ प्रूफ हम देख सकते हैं टेकिंग एग्जाम्पल. तो एज अ रिमार्क वी आर जस्ट सेइंग हियर the above theorem you can see. जैसे आपसे कोई बोले कि भाई अगर इंटरवल क्लोज्ड नहीं है तो क्या ये चीज ट्रू है? नो, द थ्योरम इज नॉट ट्रू if the interval if the interval is not closed. So considering a function, consider this is your fx, which is 1 upon x into x minus. When this x is lies between 1 and 3. So here the way are taking this is open interval, है ना? हमारे पास क्लोज इंटरवल नहीं है. दिस इज ओपन इंटरवल 0, 1. So let us see it is true. This function is continuous in the open interval when x is less than 1 and greater than 3. But as x tending to plus 0, it means from plus 0 from so this fx will be tending to plus infinity. And as this is x tending to 1 minus 0, it means this fx is tending to minus infinity. Okay. तो अगर हम इसका पॉजिटिव लेते हैं, if x taking x from positive side it will be plus infinity. अगर हम राइट साइड में आते हैं तो this is from negative. You can just say, you can also say like this. लेफ्ट हैंड लिमिट एट at 1 है ना. तो when x is tending to 1 from the left, this effect will be tending to minus infinity. Okay. So so thus the theorem is does not hold. Hold here because when infinite interval cannot be divided finite number of ओके. तो ऐसा ओपन इंटरवल के लिए पॉसिबल नहीं. बट दिस इज द थ्योरम ओनली होल्ड्स फॉर द क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी. ओके. तो आई होप ये थ्योरम समझ में आया होगा. कैसे इसका प्रूफ हमने लिखा 1 by 1 स्टेप, वो भी समझ में आया होगा, है ना. हमने क्या करा कि हमने पहले माना कि ये चीज होल्ड नहीं करती, फिर हमने उसको ब्रेक करा और हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आ गए ए कॉमा बी, A1 B1 A2 B2 एंड दिस इज A BN, है ना. फिर हमने इनके लेंथ की. ये तो लेंथ हमारे पास क्योंकि हम रिड्यूस करते रहे एन टेंडिंग टू, जो इंड पॉइंट्स हैं वो किसी सेम नंबर पे कन्वर्ज होंगे एंड वो नंबर बिलोंग करेगा
एन कामा बी एन के से इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उस क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब x बराबर अल्फा पे पी, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो कोई दो पॉइंट्स हमने ले लिया, एक्स डैश कामा एक्स डबल डैश, तो उन दोनों को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 रख दिया फॉर कन्वीनियंस, हमने अपनी प्रूव करने के लिए। और देन वी शोड कि हमारे पास तो एफ एक्स टेस्ट माइनस एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हम उस इंटरवल में लेके नहीं चले, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं था, हम तो ऐसा लेके ही चल रहे थे, बट वो इंटरवल में हमने ये चीज प्रूव दिया, तो कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब है कि दिस थ्योरम इज ट्रू, है ना, दिस रिजल्ट इज ट्रू। क्लियर? तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट थ्योरम, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।